Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. Throughout my answer writing videos, I have mentioned the importance of quoting relevant facts and data in the answers to enrich the quality of the answers and also to fetch more marks. Now the question rises, कहाँ से source लाएं, कौन से facts पढ़ने हैं, कौन सी reports refer करनी है. There are a number of sources online and trust me, there are lengthy, bulky and time consuming. किस सोर्स से कौन सी चीज एक्सट्रैक्ट करनी है एज पर द पेपर, दिस टुडे वी विल बी डीलिंग विद. नाउ देयर आर टू सोर्सेज फॉर द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड डेटा. फर्स्ट अप इज द न्यूज़पेपर. I cannot emphasize enough the importance of newspaper reading. Newspaper starting में बहुत boring भी लग सकता है, but trust me, it will be worth it. Once you will start reading the newspaper, it will have many-fold impacts. First up is, of course, it will improve your language proficiency, which is one of the parameters. अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू फ्रेज सेंटेंसेस. कभी कभी स्टूडेंट्स हैव द आइडिया, उन्होंने सारा कंटेक्स्ट पढ़ रखा है, ओके ये इसका कॉन्सेप्ट है, बट हाउ टू फ्रेज प्रॉपर सेंटेंस यूजिंग दैट कंटेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, बेटर वोकैबुलरी. This will come from newspaper reading because you are from English medium, so I'll assume you are reading an English newspaper and therefore this will definitely help in improving the language proficiency. Second up is memorizing facts. In the recent prelims paper आपने देखा होगा, the current affairs were asked in abundance. So current affairs का importance is huge. And anyways in the mains answer writing आपको current affairs now and then quote करने ही है. So imagine a student who is referring a compilation of all the news before the exam and one student who is doing a thorough reading of the newspaper throughout the 365 days. What's the difference? जिस बच्चे ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसके पास एक पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी हाउ थिंग्स आर प्रोसीडिंग. फॉर एग्जाम्पल डे बाय डे एक स्टोरी बन जाएगी स्पेसिफिकली इन IR कि किसी भी कंट्री या नेशन से हमारे रिलेशंस कैसे कैसे डेवलप हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कब फ्रेंडशिप ट्रीटी में है या स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन रहे हैं या वी आर साइनिंग सम डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील्स एक्सेट्रा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम कॉन्फ्लिक्ट्स, व्हाट आर द सोर्सेस. सो एक पूरी स्टोरी बन जाएगी. बट व्हेन यू विल बी रीडिंग द कंपाइलेशन देन यू विल हैव टू डू रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग, एंड एट द एंड कितने ही फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे. तो ऑफ कोर्स द फर्स्ट सोर्स, इररिप्लेसेबल सोर्स इज न्यूज़पेपर. We'll be talking about the second source today. I have pointed out some sources and specifically how to read them in the context of the topics and the GS paper. इन सारे सोर्स को रटना नहीं है बट समझना है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हम पढ़ सकते हैं. You can choose one or two for each paper. For example, GS1, which is Indian Society, History and Geography. अब there are a number of sources. Note कैसे बनाना है? One simple form is table format. A4 शीट एक फाइल बनाइए आंसर राइटिंग के लिए एंड जस्ट टेक सम A4 शीट्स, मेक वन शीट फॉर GS1, GS2, GS3 एंड लाइकवाइज. जस्ट एग्जाम के पहले आपको एक शीट पे एक बार नजर डालनी है. यू हैव टू जस्ट रिकॉल ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड यू विल हैव हैंडी डेटा टू कोट इन द एग्जाम्स. दीज आर द नंबर ऑफ टॉपिक्स जो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है फॉर means. There might be some other, you can choose more, but this is just a sample. Let's quickly begin with the first source. Now, census projection. Try to incorporate as latest fact as available. For example, जैसे बहुत सी reports होती हैं तो हमें कोशिश करनी है, if you are attempting 2025 or 2026, then just the previous जो भी report आई है latest fact जो है वो quote करिए. But अगर उससे पहले का भी है, it won't be invalid, but please try to quote the latest fact. Now, how you are going to use this source? India's population projected at 1.43 billion, overtaking China in 2023. So, India's population projected at 1.43 billion and we overtook China in 2023. This can be useful in population and urbanization. So, for population, you must have a handy hold on the content about census, the population of India. Also, this will be useful in writing the answers about urbanization. Next up we have the National Family Health Survey. Extremely important source. यहाँ से कैसे पढ़ना है आपको? यहाँ से you can take data about the gender issues and health. For example,
Anemia among women, that is 15 to 49 years, is at 57% nationally. See, the stats will differ for each year. With every report, the stats will change. So you will have to change the stats as per your target exam. UN Women Report, some national reports, some international reports. Women spend 7 times more time on unpaid care work than men in India. Now, this is very important for patriarchy, gender, inequality, under all these topics in the society section. Because society, there's more part of theoretical parts. Jahan pe if you will substantiate your arguments with the facts, you will fetch more marks. Niti Aayog, Sustainable Development Goal Index. Now, very important, जिसने टॉप किया है वो तो जरूरी है ही है, but who was in the lowest performer? For example, Bihar. Why? The parameter is also important in education and health related goals. Regional disparity, that some states are performing better than the others and some states are lagging behind in the basic parameters like education and health. So in reports को पढ़ने में what you have to keep in mind, रटने से ज़्यादा समझने पे ध्यान देना है. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ऑफ कोर्स यू विल हैव अ गुड होल्ड ऑन ऑल द गोल्स. देन यू विल रिलेट कि इंडियन स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड कीप द इंडियन मैप इन माइंड एंड जस्ट प्रोजेक्ट द विजुअल इमेजेस कि कहाँ का एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है. तो रट्टाफिकेशन ज़्यादा, यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड दैट विल बी हेल्पफुल इन राइटिंग द एग्जाम्स. State of Forest Report 2023, this is a source for geography. Now, India forest cover increased by 1540 square kilometer, which is mostly under the open forest. अब क्या क्या categories होती हैं? It's important to keep in mind. Now, this is for environmental geography. We can show some progressions, the positives that yes, we are doing some progressions in the forest cover. Just a sample example, how you need to use the source, what fact you need to quote. पूरी रिपोर्ट पढ़ने का लेके पूरा प्रिंट आउट कोई फायदा नहीं है. आप देखिए उसमें से हम क्या क्या टॉपिक्स पे निकाल सकते हैं. जस्ट वन फैक्ट विल बी इनफ फॉर राइटिंग द गुड आंसर. कमिंग टू GS2 पॉलिटी सेक्शन, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस. PRS Legislative Research 2024, it mentioned that only 13% of the bills were referred to the committees in budget session. So parliamentary committee is very important because अब the polity section is coming more from the non-constitutional, constitutional bodies and all these sections which were earlier less asked. Uses weakening the legislative scrutiny. In the polity, often analytical questions are asked, not direct. Ab in analytical questions mein, if you have a hold on these facts, trust me, the introduction will be very easy for you. Just ye data likh diya and intro is done. Law Commission Report 2023. It recommended retaining the sedition law with safeguards. A very current related topic, sedition law पे discussions हुए थे. If we will say that as per the Law Commission report, it recommended that yes, we should retain, then we have a very strong argument. It will come under freedom of speech, legal reforms. India Justice Report 2023. Only 29% of police posts for women are filled. Again, police reforms, gender justice, women empowerment, multiple topics. Union budget, a budget and economic survey, very important, but selective smart study is important. पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है. So allocation to the health sector rose by 13% to 91,000 crore rupees. Health scheme sustainable development goal. So always link the topic with the goal. Second ARC, ethics and governance, recommends ethics office in ministries to improve the integrity and accountability. This will be used as a way forward while suggesting. You can write it in conclusion as well. Governance reforms, ethics and governance. National Family Health Survey 5. Only 25.4% of women participate in major household decisions in some state. Gender empowerment and society and governance. So just women को representation दे दिया है हमने, reservation दे दिया है. Is it enough? No. Even today in the households, the decision is taken by the male counterpart only. So you can just take a screenshot and understand. Yes, you can also add the sources, but on every important topic you must have a hold on one source, and you must also know कि एक source को multiple ways में कैसे use कर सकते हैं. So this can be used in police reforms as well, but because women की भी बात कर रहे हैं तो under gender justice as well.
GS3 इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक. इकोनॉमिक सर्वे एज मेंशन बजट के साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है. India's real GDP growth estimated at 9.2% for the financial year. Economic trends. सर्वे से मेनली आपको ट्रेंड्स ही पढ़ने हैं. क्या क्या बेसिक चेंजेस आ रहे हैं, व्हाट इज द ग्रोथ प्रोजेक्शन. जीडीपी का ग्रोथ तो पता होना ही चाहिए, एंड द रियल जीडीपी. SEBI report 2023, India has 1.5 crore active retail investors in mutual funds. Now this is about the financial literacy, market participation. These are very trendy topics जिन पे usually कम data होता है लिखने के लिए. So please try to write some facts about these. Now, National Crime Bureau, 1.3 lakh cyber crime cases, up to 24% from 2022. So yes, we have some data and comparison भी दिया हुआ है. Cyber security, internal security. अब ये कुछ ऐसी रिपोर्ट है which cannot be skipped. See, economic survey, budget, about GDP, about women, about education, about from National Family Health Survey, the health sector, from the Crime Bureau, the cyber crime cases. These cannot be skipped. इनको तो आपको एक पेपर पे लिखना ही लिखना है, and you have to memorize them. State of forest report is back. Why? Open forest, as mentioned now here, this can be used under the conservation and forest management category. So same report का same data है which we are using in geography as well as in the environment. How easy it becomes, right? अगर आप समझने लगे कि कैसे, वरना लगता है कि इतने सारे questions हैं, कितने facts याद करेंगे, कितने नहीं याद करने हैं. Just be selective and smart. IPCC ARC 6 2023 report, global temperature now 1.1 degree Celsius above pre-industrial levels. Climate change, बहुत ही कॉमन टॉपिक है. इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी, दिस कैन बी रिटन इन इंट्रोडक्शन थ्रू आउट द बॉडी एनीवेयर. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, Karnataka ranked top due to the strong startup ecosystem and R&D base. This will come under innovation, startup ecosystem. You can look about the top rankers and the lowest performers. Union budget, again here, the capital expenditure up by 11%, a push for the infrastructure led growth. It will be under investment and growth strategy. So यहाँ से हमने क्या देखा, under the survey, budget and the state of forest report. ये irreplaceable data है which you must know. Specifically survey, और इससे हमें trends देखने हैं, कितना कितना change आया है regarding the previous financial year. Go for the latest reports. And बाकी SEBI या NCRB की reports ऐसी हैं जिसका data you can use in multiple topics, multiple dimensions. GS4, अब ethics में main role examples का ही है. As much you will substantiate your arguments with the examples, you will fetch more marks. Second ARC, पढ़नी ही पढ़नी है. Ethics and governance, पूरी नहीं, just the main highlights. It recommends institutionalizing the code of ethics and mission statements in all the ministries. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इसको समझने में ही आ जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है. क्या है कि हमें कोड ऑफ एथिक्स एंड मिशन स्टेटमेंट्स मिनिस्ट्रीज में ऑफिस करना है, एथिक्स ऑफिस करना है एथिक्स के. So this is useful in ethics in the public administration. India Justice Report, it highlights the lack of ethical training and gender sensitivity among the frontline law enforcement. Ethical governance के अंडर आ जाता है. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, अब ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कितने रट लेंगे आप, इंस्टाग्राम से, न्यूज से थोड़े बहुत पता चल जाएंगे आपको, बट इन द एंड यू विल हैव टू नो अबाउट अ नंबर ऑफ IAS ऑफिसर्स हु आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड. फॉर एग्जाम्पल Srijanpal Singh, Mr. Srijanpal Singh is running a village transformation program post the service. So he was an ex-IAS officer. This will come under integrity, dedication to the public service. You can quote a number of them. For example, TN Seshan, Chief Election Commissioner Officer for the Electoral Reforms, Ashok Khemka, the latest, the better. और ये कहाँ से पता चलेगा? Most important is newspaper. नहीं पता चल रहा है तो just Google it out and at least make a list of the number of officers under each issue. For example, integrity, dedication to public service. किसी का कोई और purpose हो सकता है. So this will be really helpful for you in writing the answers. ये सारा जितना भी डेटा था सिर्फ यही नहीं पढ़ के जाना है, बट इससे समझना है कि हाउ टू इंटरप्रेट. इतना भी कर लेते हैं, दैट्स वेल एंड गुड. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज द सोर्स एज पर द exams and GS papers. We'll be back with another interesting video super soon. Thanks for watching.